तो हाय एवरीवन, आज है 9 तारीख अप्रैल का महीना एंड बुधवार का दिन। आज के दिन निफ्टी का एक्सपायरी रहने वाला है बिकॉज क्योंकि गुरुवार को मार्केट बंद है, तो आज के दिन सारे प्रीमियम्स एक्सपायर हो जाएंगे। सो दैट्स व्हाई नीड टू बी कॉशियस। सेकेंड थिंग इज, जो कि मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग है, मार्केट एकदम 60% एरिया के आसपास है। तो गैप डाउन ओपनिंग के कारण व्हाट आई एम टेलिंग अबाउट 60% इज, जो सेलिंग स्विंग पूरा बना था उसका 60% एरिया के आसपास है। एंड गैप डाउन के कारण एक काइंड ऑफ ये वाला मोमेंटम हमें लार्जर टाइम फ्रेम के लिए देखने को मिल सकता है। एंड टेलिंग अबाउट द प्रीमियम्स, they are little bit high today, maybe due to the expiry and all. सो आज के दिन ये वाले प्रीमियम जो कॉल के कल के दिन बढ़े हुए थे, आज के दिन मेल्ट आउट हो जाएंगे। एंड जो पुट के प्रीमियम्स यहाँ पर कम दिख रहे हैं, दे विल बी गोना इंक्रीज अभी, क्योंकि मार्केट गैप डाउन कर देता है। तो उसके बाद देखना पड़ेगा कैसा क्या मोमेंटम रहता है, देन आई विल ऐड सम पोजिशन। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, देखो कल के दिन जो ब्रेक डाउन हुआ था 22,300 का, उसका ब्रेकडाउन के बाद मार्केट एक बार भी ये लो टेस्ट नहीं किया। इसका मतलब मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ होल्ड कर रहा है। लेकिन आज के दिन जैसी क्लोज जैसी ओपनिंग दे रहा है मार्केट, यहाँ पर कहीं भी लोगों को सेल करने के लिए मौका नहीं देगा मार्केट, अगर दिखाया तो। क्योंकि ये पहला ये सपोर्ट, यहाँ पर अगर सपोर्ट दिखाता है तो यहाँ से फिर सपोर्ट रिवर्सल करेगा। सेकेंड थिंग, अगर कहाँ से सपोर्ट दिखा सकता है, 22,000 एक राउंड नंबर है, वहां से सपोर्ट दिखा सकता है, तो वहां से फिर एक लोगों को ट्रैप करेगा। तो दो तीन जगह है जहाँ से मार्केट ट्रैप कर सकते हैं। देखो गैप डाउन में थोड़ा सा कॉशियस होने की जरूरत है, बिकॉज पीपल विल बी थिंकिंग चलो अभी तो हो गया और क्या ही खराब होगा, राइट? तो लेट मी ऐड द प्रीमियम्स आल्सो। खुद के प्रीमियम्स ऑलरेडी थोड़े बड़े हुए, सो आई नीड टू गो फॉर आउट ऑफ द मनी वैल्यू। 800 का ब्रेकडाउन खुलते ही साथ कर दिया है, एंड देयर इज नो पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस देयर। इसी ब्रेकडाउन के चक्कर में यहाँ पर भी 400 का ब्रेकडाउन हो गया था। बैंक निफ्टी पहले 400 का ब्रेकडाउन हुआ, लेकिन जहाँ से सपोर्ट ले रहा है, दैट इज नॉट अ गुड प्लेस। यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, वहां से कोई भी यहाँ पर बाय करने के लिए सोच सकता है। बट एज सच कोई पॉइंट नहीं सपोर्ट के लिए इन निफ्टी एंड इन सेंसेस ऑल्सो। एग्जैक्ट अपने सीपीआर के पास है। थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ पर, बिकॉज जैसी जगह से सपोर्ट ले रहा है वहां से। लेट मी ऐड द प्रीवियस इन दिस ऑल्सो। 22,450 का कॉल ऑप्शन, 22,500 का कॉल ऑप्शन, 22,250 का पुट ऑप्शन, 22,200 का पुट ऑप्शन। So last one is 22,350, 22,300 का put option. So these are the all premiums। देखो हैमर वगैरह देखिए, कोई भी यहाँ पर डेफिनेटली बाय करने के लिए सोचेगा। एंड द सपोर्ट इन बैंक निफ्टी which looks dangerous। पहले तो मार्केट ने गैप डाउन ओपन देके खुद के प्रीमियम्स को ऑलरेडी बढ़ा दिया, अभी फिर रिट्रेस बैक कर रहा है ताकि वो मेल्ट डाउन हो जाए थोड़े। खुद के प्रीमियम्स ऑलरेडी थोड़े मेल्ट डाउन हो चुके हैं। चलो एक अच्छा राउंड नंबर का ब्रेकआउट भी हो चुका है।
So having a put option here is going to be good only. But I need to wait for the candle closing. Otherwise, तो खराब होने के chances मेरे भी हैं. But one thing that I can see here is hammer बहुत ही अच्छा दिखाया है. So that's why the market is showing this kind of hammer for exact round number which is in magnitude. So having a position is not a issue here. So I have got the price on a little bit higher amount. It's 92, I could place it at 82.6. And this should be 82. No doubt the fluctuations are high. Price that I have got is of 92. A little bit higher price, but having an retracement from here. So I have got the stop loss. The support that Bank Nifty is showing right now is a little bit of cautioning support. No doubt this premium can go for. Okay, let's see. So let's see some observations here. Look, when market is holding on 22,360, look at the last somewhere close to six candles, and look at these six candles. These are continuously falling and not holding anywhere, just showing the kind of symbol of holding, then again reversing. So these are the kind of markets where we should avoid trading or we should limit ourselves, because whenever this kind of market happens, only people will try to eat your premium and melt down it, because the more premium meltdown happens, the more we will be getting money from the option sellers as an option seller. Look at this momentum also. From 52 it has gone 81. But does this momentum going to stay? No one can say. Because you can see the volume of this red candle, which is higher. Possibility would be could analyze that, but waiting for this kind of momentum is very rare. If you can wait, then you can get. Look at this put option also. It has fallen from 80 to close to 59 right now. So 30 points of momentum against you for only 20 points of gain. So this is not something appropriate here, because when you plan for this to get this, देखा put option में जैसा retracement हुआ, अगर उसका उतना momentum यहाँ होता, then we can think of कि ये चलो sustainable buying है, but this is not happening. The momentum is very slow and put option is falling uh, very high speed on a high speed. So in Sensex and Bank Nifty also. First Bank Nifty, the support that I have seen right here.
the rejection candle I have seen. Okay, so Bank Nifty has taken resistance from 50,500. So buying side possibilities are there, but this kind of holding, holding up to this level is something that writing down the call options only, because you can see the momentum is good in the call option, but if I add a little bit ITM option also, 22,350 call option, then also you can see in that call option that the momentum we should have no doubt this is a good momentum, but the question comes here is does it going to sustain because it has come in all the three indexes at the same time. कहीं ना कहीं ये ट्रैप भी बन सकता है एंड मोस्ट प्रोबेबली अगर ये टैप नहीं बनता यहाँ से कंटिन्यूएशन होता है तो एटलीस्ट 500 का ब्रेकडाउन यहाँ से देखने को मिल सकता है बट इन व्हाट हैपेंड इन द फर्स्ट 6 candles of 5 minutes or first 30 minutes is something that is unbearable for any option buyer at any place क्योंकि ऑप्शन बायर को मोमेंटम फास्ट चाहिए होता है एंड ऑप्शन बायर के लिए ये जो वेटिंग पीरियड है 30 मिनट्स का उसके लिए बहुत बड़ा लॉस है सो दैट्स व्हाई इट्स गुड दैट वी हैव एग्जिटेड इफ दिस डजंट सस्टेन कब पता चलेगा कि ये सस्टेन होगा कि नहीं just wait and see that 60% retracement happens or not. If this momentum has reduced by 60%, then there is no possibility of going this back. Yes, there is a probability, but there is very less probability of that. So we need to wait and see that. And does it come here or does it gonna sustain and give a 500 breakout? So here market has trapped the buyers बिकॉज यहाँ पर जो मोमेंटम सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे थे हम लोग वो कम्प्लीटली रिवर्स हो चुका है इसका मतलब कोई भी यहाँ पर स्ट्रेंथ नहीं है मार्केट में बिल्कुल मार्केट करते ही बस ट्रैप करने के लिए आया हुआ है और प्रीमियम मेल्ट डाउन करेगा देखो यहाँ पर विद इन दिस रेंज इट विल स्टे समवेयर क्लोज टू 12 PM ये 12 बजे से पहले पहले कोई बड़ा मोमेंटम अभी नहीं आएगा मार्केट में जो भी होगा ये साइडवेज मोमेंटम होगा जो प्रीमियम्स ऑलरेडी बढ़े हुए थे उनको मेल्ट डाउन करेगा मार्केट एंड दैट्स इट so having risk management in this kind of market is completely necessary. Otherwise, we can't sustain it. So this is the positions, and these are the this is the contract note of 70 rupees, and this is the position right here. So there is no point of risking the capital in this kind of market, this kind of sideways and crappy market. So let it be, let it go. No worries. Let's see. We'll look at any good momentum. It comes. I will update you. The time when I started telling you कि ये वाला प्रीमियम देखो that was at 137 on this point and market has come till this point right now but it is right now it's 110 that means देखो कितने हाई लेवल का प्रीमियम मेल्ट डाउन बिकॉज यहाँ पर मार्केट अगर रेंज बाउंड नहीं रहेगा तो जनरली क्या होगा कि पीपल वुड बी थिंकिंग दैट कुछ तो बड़ा होगा आज के दिन बट कुछ बड़ा नहीं होगा ये प्रीवियस डे के रेंज को भी ब्रेक नहीं कर पाएगा प्रीवियस डे का जो हाई लो बना था ये जो लगभग एक 400 पॉइंट का रेंज बना था उसको भी ब्रेक नहीं कर पाएगा आज का मार्केट टोटल साइडवेज है ठीक है ऐसा मार्केट में हाथ जलाने से बेटर है अपना हाथ आग में सेक लो ठीक है Let's look at the premium from 137 to it has come till 100 40 points का retracement although market is staying as it is before losing your capital and the oxygen in this kind of market is totally valueless. The first selling order why I have placed is looking at the rejection of this bank nifty. Means if you look at the bank nifty, the support is exactly formed when the first 5 minute candle is right here. So looking at this support, I tried to sell here, but unfortunately due to the rejection, market has taken the stop loss. And in Nifty,
the rejection candle first has turned into some bearish candle. So there is no access point of buying and selling within this range. So I will change a little bit rule here in the first 5 minute range because I have a lot of time phase place in the first 5 minute range. If I place any kind of order, then the possibility of getting that hit is very high. So uh, uh, entering into a trade which is in the first 5 minutes is not a good option. So entering will be avoidable in the first 5 minute range if it is within only. If I look at the trading order times, it is at 990 and stop loss is at 920. So if I would be entering it at 920 or 1021 something, still I have to get the stop loss only because this is a total range bound market. We are not able to get, we will be not able to get any momentum out of this. So not having position in this kind of market is a good option, but how will you know that market is going to be this kind? So you need to execute, but you need to keep your risk management in control only. So good day. If any observations come, I will shall we share with you. सो यहाँ पर मार्केट कंप्लीटली साइडवेज है जो कि यहाँ पर रेंज बना था फर्स्ट 5 मिनट में वही रेंज के अंदर मार्केट है जैसा कि मैंने प्रेडिक्ट किया था एंड लिक्विडिटी देखो यहाँ पर मिली मार्केट को जब यहाँ पर थोड़ा सा बाइंग साइड सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था मार्केट पीपल वुड बी प्लेसिंग स्टॉप लॉस हियर क्योंकि ये रेंज का लो था तो यहाँ पर जब बायर्स के स्टॉप लॉस होंगे तो सेलर्स यहाँ पर बड़े प्लेयर्स जो होंगे वो सेलिंग का पोजीशन यहाँ पर नहीं बनाएंगे जब यहाँ पर रिटेलरों ने सेलिंग का पोजीशन बनाया तब जाके मार्केट एक अपसाइड का मोमेंटम किया क्योंकि यहाँ पर बायर्स की लिक्विडिटी उनको मिल गई आराम से मतलब बायर्स के स्टॉप लॉस मिल गए तो बायर्स का क्योंकि सेल पोजीशन बन गया था तो यहाँ पर सेलर जो भी बड़े प्लेयर थे उन्होंने बाइंग साइड का मूवमेंट किया यहाँ पर कंटिन्यू एक 100 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिला 100 से 80 पॉइंट्स का मोमेंटम एंड इन प्रीमियम एट द मनी प्रीमियम 30 पॉइंट्स का मोमेंटम देखने को मिला सो विच इज कम्प्लीटली साइन ऑफ अ साइडवेज मार्केट ऐसे मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट के अंदर ही रहना दैट इज द बेस्ट ऑप्शन टू बी देयर बाकी नो डाउट बाकी सेटअप वगैरह होंगे एक्टिवेट यहाँ पर जब हाई ब्रेकआउट होगा या फिर हाई से रेजिस्टेंस लेगा दो सेटअप एक्टिवेट हो सकते हैं यहाँ पर लेकिन we are under our risk management so there is no need to be worried about if any observations come I will share with you otherwise this is the end of the video